Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Cantab Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Cantab Publishers. So get ready, my dear students. Dear students, we discussed about balanced diet. अब balanced diet तो जरूरी है, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ एक और चीज भी जरूरी है कि सिर्फ डाइट ही नहीं, हम अपनी सेहत का और तरीकों से भी ख्याल रखें. उसमें क्या क्या आता है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. सो फैक्टर्स फॉर हेल्दी लिविंग. हेल्दी लिविंग के लिए कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं? लेट्स जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट. अ हेल्दी लिविंग रिक्वायर्स सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अस. If we do not take good care of ourselves, we will become ill. These things are necessary. Number 1, eating a balanced diet. Number 2, keeping clean. Number 3, getting a good night's sleep. Number 4, exercising regularly. Ab balanced diet is important, but beside that, cleanliness, rest and sleep, sufficient exercise. So, what is the need of cleanliness? For example, here, cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Safai nisaf iman hai. This is very much important. Islam says to us that we have to keep ourselves, our environment clean. A clean body is away from germs and thus from diseases. Cleanliness completes by keeping the body as well as environment clean. अगर हम clean नहीं रखेंगे तो क्या होगा? Germs will enter into our bodies and we will become ill, और वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस क्रिएट करेंगे और हम बीमार हो जाएंगे. तो बैलेंस डाइट का क्या फायदा होगा? उसके बाद rest and sleep also very important. If we don't take proper rest and don't sleep properly, उसमें सबसे ज्यादा देखा गया है कि आप लोग जब आप रात को टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, तो अक्सर बच्चे अर्ली नहीं सोते हैं. तो आप लोगों ने सुना है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. सो यू नीड to sleep earlier ताकि सुबह सवेरे आप उठ सकें. The proper amount of sleep is from 6 to 8 hours a day. Proper sleep makes our body strong and help us fighting against diseases. During deep sleep, our body parts get rest and our mind becomes relaxed. When we get up after deep sleep, we feel fresh and can work more efficiently. So, balanced diet के साथ cleanliness भी बहुत जरूरी है और उसके साथ rest भी जरूरी है, proper sleep भी जरूरी है. Coming to the next one, and that is sufficient exercise. जो लोग exercise नहीं करते तो उनकी body खराब हो जाती है. To keep oneself healthy, food is one thing and proper exercise another. Physical exercise provides nutrients from the body we have, from the food we have taken into the body, and thus keeps body, bones and mind strong. हमने जो खुराक लिया, जो बैलेंस डाइट ली, that is in our stomach. अगर हम एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपरली तो वो डाइजेस्ट होगा. जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. और जब हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी
तो हमारी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगी और हम ज्यादा पढ़ सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे. देयर आर मेनी वेज टू टेक एक्सरसाइज. Walking is the best of them besides cycling, swimming, jogging or some of other efficient ways of exercise. If you could not perform any of these, go for flexibility works out shown in the given programs. आप लोग अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप घर में रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो you can choose any type of exercise that can keep body parts movement. या आप ऐसे झुक जाया करें, up right hand with left leg, with left toe, and your left hand with the right toe, and then दोनों हाथों को उठा लो, ऊपर क्लैप करो, फिर नीचे बिल्कुल टी की तरह बन जाओ, फिर नीचे थाइस के साथ उसको क्रप मारो. उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी जगह पे टो एंड फ्रो मोशन आगे पीछे भी करो. इससे आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को मूवमेंट मिल सकती है. एंड यू सी द स्किपिंग रोप ले, उसके ऊपर शुरू करें. यू विल एंजॉय इट एंड इट विल हेल्प यू, योर बॉडी बिकमिंग स्ट्रांग एंड स्ट्रांग. एंड यू कैन डू रनिंग ऑल्सो. एंड द लास्ट वन, पुशअप्स. जमीन पे अपने पाम्स रख के अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएं, आराम से ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे लेकिन याद रहे तेजी बिल्कुल बेटा नहीं करनी इसके अंदर. अगर आप करोगे तो आपको आपके मसल्स पुल हो सकते हैं. पहले आप सही वार्म हो जाएं. जब तक आपको वार्म अप ना हो आप लोग तेजी से कुछ नहीं करोगे. गेटिंग माय पॉइंट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर. It is very important that everyone play its part to keep itself and surrounding clean. It will develop a healthy society. You can educate others in this regard. Prepare a colorful flyer poster showing how much cleanliness is important. You may also show the ways to keep oneself clean. आपने होमवर्क आपको ये मिला कि आप लोगों ने एक छोटा सा फ्लायर बनाना है, राइट? उस फ्लायर की मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, बनाना आप लोगों ने है. आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर अपनी बॉडी प्रॉपर आप लोगों ने शावर लेना है रेगुलरली, डेली. अपने बाल, अपने बॉडी को, अपने नेल्स काटने, साफ करने हैं. उसके बाद आपका जो बेडरूम है, बेडरूम को भी सही करना है आपने. और बेडरूम के बाद आपने हाउस को भी साफ करना है. अपने हाउस में अपने मम्मा के साथ हेल्प करना है. और उसके बाद स्ट्रीट में गंद नहीं फेंकना, वहां जो डस्टबिन लगे हुए हैं उसके अंदर करना है. और जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, शॉपिंग बैग्स बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक के बने होते हैं. हम क्या करते हैं, शॉपिंग बैग्स को लोग पानी में फेंक देते हैं. प्यारे बच्चों आपको पता है कि शॉपिंग बैग तो पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये ड्रेन्स में चला जाता है. और ड्रेन्स में जब ड्रेन्स कोई निकालता है, वो भी तो इंसान होता है, हमारा ही इंसान है, मुसलमान का भाई है, तो उस वक्त तो बहुत गंदा होता है. तो प्यारे बच्चों आपने एक फ्लायर बनाना है, खासकर शॉपिंग बैग्स पे बात करनी है सारे लोगों को कि शॉपिंग बैग्स पहले तो घर ना लाएं. अपने साथ कोई बैग यानी कपड़े का क्लॉथ बैग लें और उसके अंदर अपने सब्जियां, फ्रूट्स लाएं. लेकिन अगर शॉपिंग बैग ले भी आए तो उसको ड्रेन्स में नहीं जाने देना, इसलिए कि ये सॉल्युबल नहीं है पानी में और वो ब्लॉकेज करेगा और फिर गटर बंद हो जाएगा, बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी. सो आपने और मैंने मिलके लोगों को एजुकेट करना है. करेंगे इंशाल्लाह. Okay, well done my dear students. Coming towards homework activity, so you have to pick out your workbook and your summer pack and perform all the activities which are given in these two books. करेंगे इंशाल्लाह. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.